So now we will learn the second sutra of Yoga Darshan, the first chapter. So second sutra explains and it mainly defines yoga. What is yoga? What is the definition of yoga? So in the first sutra we have seen Atha Yoga Anushasanam. So systematic learning of yoga begins there. Now here what yoga is. So it says Yogaschitta Vritti Nirodha. So there are few important things which we have to understand. Here Maharishi Patanjali talks about yoga, he talks about chitta, he talks about vritti and he talks about nirodha. So if you study the whole Yoga Darshan, you will see that whole Yoga Darshan basically is trying to explain this sutra only. What is yoga? What is chitta, vritti and nirodha? So yoga means, or the word yoga has come from the root yuj, which we have already discussed. Now yuj means to join. Chitta is chitta and vritti is the functional modification of that chitta or the different states of the chitta, and nirodha is total complete stoppage of that particular state. So yoga is bringing to a complete cessation of the functional modifications of chitta. So you have to completely stop all the functional modification of your chitta, then it is called yoga. So let us begin with the word yoga. We will just try to understand what is yoga. The word yoga in Sanskrit has a very large number of meanings. योग मीन्स टू ज्वाइन, दो चीज़ों को जोड़ने का काम भी योग ही कहा गया है. योग अगर आप एस्ट्रोलॉजी में जाएंगे तो इट टॉक्स अबाउट डिफरेंट योगास देयर ऑल्सो. सो इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड यूज विच मीन्स टू ज्वाइन एंड द आइडिया ऑफ ज्वाइनिंग रन्स थ्रू ऑल द मीनिंग्स. सो जितने भी मीनिंग्स हैं, जितने भी इसके भावार्थ हैं योग के, वहाँ पर सभी जगह पर एक ही चीज़ कहा गया है कि टू ज्वाइन, जुड़ना. So what are the two things which are sought to be joined by the practice of yoga? तो यहाँ हमें ये समझना है, we have to understand what are these two things. ये कौन सी दो चीज़ें हैं जिनको हमें जोड़ना है योग के मार्ग से, या योग मार्ग इन दो चीज़ों के बारे में, जिन दो भी चीज़ों के बारे में बात कर रहा है, वो कौन सी चीज़ें हैं जिसको योग मार्ग जोड़ना चाहता है या योग मार्ग से जोड़ा जा सकता है. So according to the highest conceptions of Hindu philosophy, of which the science of yoga is an integral part. तो सबसे बड़ी बात यह है कि योग इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडियन फिलॉसफी, इंडियन सिस्टम, इंडियन सिविलाइजेशन. टुडे वी हैव एक्सप्लेनेशन up to Indus Valley civilization or maybe few older civilizations which we can correlate. But if you go with the Vedic tradition, Vedic philosophy and the Shastra which basically runs into the blood of the Indians, we know very well, हमें मालूम है कि this whole philosophy, it is present here from ages actually. So it is an integral, yoga is the integral part of our Indian philosophy. Now the human soul, जो जीवात्मा है, is a facet or partial impression of the oversoul of the Paramatma. तो हम ये मानते हैं कि हर आत्मा, every individual soul is a partial impression or the impression of the supreme soul. आत्मा जो है परमात्मा का एक अंश है. So the divine reality which is the source of the manifested universe. तो जो आत्मा है वो परमात्मा का अंश है. परमात्मा क्या है? परमात्मा का ही अंश लेकर यहाँ संसार में सब कुछ चल रहा है. Whatever you see today, it is the manifested universe of the supreme self. So then we come to the word chitta. तो योग समझने के बाद बातें चित्त क्या है. This word is derived from the word चित्त और चिति, one of three aspects of परमात्मा. परमात्मा को सत, चित्त और आनंद कहा गया है. तो उसमें जो चित्त है, जो कॉन्शियसनेस है, जो चेतना है, दैट इज योर चित्त. सो वेयर एज माइंड
The mind is possessed by three qualities. The mind, the essence, the sattva is there because it has the nature of illumination. Disturbing energy is there because of its possessing the nature of activity, that is rajas. And the quality of darkness is present because of its possessing the nature of inertia. तो मन में आप सात्विक, राजसिक, तामसिक अलग अलग गुणों को देखेंगे. Now the meaning is that the mind, although one passed into more conditions than one, because it has been made up of three different qualities. तो मन में ये चीजें आपको दिखाई देंगे. अब मन अपनी एक्टिविटीज, वॉट एवर एक्टिविटीज मनस इज ट्राइंग टू डू, इट गेट्स स्टोर्ड इन द चित्त. तो चित्त जो है, मन के अंदर जो चेतना है उसको आप चित्त कह सकते हैं, या मन अपनी मैनिफेस्टेशंस जो करता है, मन अपनी जो खेल को कर रहा है, क्रियाओं को कर रहा है, वो चित्त के प्लेग्राउंड में कर रहा है. तो जो चेतना है दैट इज चित्त. सो एंड देयर आर डिफरेंट मॉडिफिकेशंस and various chitta levels or impressions are present for the different mental qualities, because the qualities are different. तो मन के जो अलग अलग वृत्तियां हैं, कभी वो खुश है, कभी दुखी है, कभी नींद में है, चेतना आपकी सोई हुई है, कभी चेतना जगी हुई है, कभी चेतना में बहुत सारी चीज़ें पुरानी जमा हो गई हैं, उनको याद कर रहे हैं आप. तो डिफरेंट एक्टिविटीज़ ऑफ चित्ता are present because of the presence of different sources. The power of consciousness does not change. So the चित्त की जो चेतना है वो चेंज नहीं होती. The power of the consciousness does not change. It does not go from object to object. ये बदलता नहीं है. The objects are shown to it from the mental impressions shown to it by mind. तो चेतना remains the same. चेतना जो है, the consciousness remains the same, but mind keeps on wandering. And it keeps on telling कि this is this, ये सारी चीज़ें हैं, and everything is getting absorbed and accumulated in the form of sanskaras in chitta. It is this aspect which is at basis of the form side of the universe through which it is created. Chitta is a vehicle which takes the mind towards the soul. तो चित्त वो चेतना है, एक व्हीकल है, एक वाहन है जो मन को आत्मा की तरफ लेके जाता है, मन को डाइवर्ट करता है, मन को भटकने से रोकता है. जो उसमें चेतना है वो उसको रास्ता बताती है. सो ये हो गया आपके चित्त का एक्सप्लेनेशन. नाउ योगा इज द सजेशन ऑफ ऑल द वाइब्रेशंस इन द सीट ऑफ कॉन्शियसनेस. तो जो आपकी चेतना है उसमें अलग अलग तरह की संवेदनाएं होती हैं. अब उन संवेदनाओं का शांत होना बहुत ज़रूरी है. इफ़ the vibrations inside your chitta or inside your consciousness does not become calm or does not become silent, so that means still you are under the influence of the chitta vrittis. So it is extremely difficult to convey the meaning of word chitta because it is the subtlest form of cosmic intelligence. तो चित्त जो है वो इट इज़ बहुत ही सूक्ष्म से सूक्ष्मतर चीज़ है, जो कि आप महत तत्व जो कॉस्मिक इंटेलिजेंस है उसका एक अंश कह सकते हैं. तो इसीलिए महत तत्व के जो सुप्रीम कॉन्शियसनेस की जो बात हम करते हैं नॉर्मली, महत तत्व जो है सुप्रीम और द यूनिवर्सल इंटेलिजेंस हम जिसको कहते हैं, और इंटेलिजेंस के साथ हमेशा चेतना बनी रहती है. तो वो चेतना वाला जो पार्ट है दैट इज बेसिकली योर चित्त. सो बट यू टू अंडरस्टैंड वन थिंग कि देर इज नो एग्जैक्ट इंग्लिश वर्ड. इंग्लिश में कोई वर्ड नहीं है विच कैन करेक्टली डिफाइन द चित्त, बिकॉज वी टॉक अबाउट द मनस, वी टॉक अबाउट द माइंड in modern times, but योग ही एक ऐसी चीज़ है, yoga is the only path which explained about the chitta and manas, what is mind and what is chitta. So there is a clear difference between manas and chitta which is also explained in Yoga Sutras. So Mahat is the greatest principle, the source of material world of the nature, as opposed to the soul which is an offshoot of nature. The reflection of this aspect in the individual soul which is the microcosm is chitta. So the reflection of the
individual soul, the chetana of that soul, is reflected in the microcosm, is reflected in the individual body in the form of chitta. So thus chitta is that instrument or medium through which Jivatma materializes its individual world. सो चित्त इस क्या है? चित्त चित्त वो एक इंस्ट्रूमेंट है, एक मीडियम है थ्रू विच जीवात्मा इज मेटीरियलाइजिंग ऑल हिज इंडिविजुअल वर्ल्ड लाइफ्स इवॉल्व्स इन द वर्ल्ड. इस संसार में रहता है, सारी चीज़ें कर क्रियाकलाप करता है until he is perfected and united with the Paramatma. So Chitta is an instrument through which the Jivatma materializes his individual world, lives, evolves in the world until he has become perfect and he is united with the Paramatma. Now the third word is Vrit. So Vritti, Vritti जो है शब्द वो वृत्त से आता है एंड वृत्त का मतलब है टू एग्जिस्ट, जो एग्जिस्ट कर रहा हो. सो वृत्ति इज ए वे ऑफ एग्जिस्टिंग बेसिकली. सो इन कंसिडरिंग द वेज इन विच ए थिंग एग्जिस्ट वी मे कंसिडर इट एज ए मॉडिफिकेशन या फिर डिफरेंट स्टेट्स या एक्टिविटीज और फंक्शंस. तो वृत्ति क्या है? चित्त के मॉडिफिकेशंस या उनके डिफरेंट स्टेट्स या एक्टिविटीज एंड इट्स फंक्शंस. सो वी अंडरस्टूड व्हाट इज चित्ता. Now we are talking about what is vritti. So vritti can be the different modifications of the same chitta at different conscious levels. So all these connotations are present in the meaning of vritti, but in the present context, this word is best translated by the words modifications or the functionings. So modification of the chitta is vritti here. तो हमने योग समझा. We have understood what is chitta. Now we are understanding the different modifications of the same chitta. Now the last word is nirodha. Nirodha means complete stoppage or complete cessation of that chitta vrittis. So this word is derived from the word niruddham. Niruddham means total restraint or total stoppage or controlled or inhibited. तो निरुद्ध का अर्थ है टोटल, पूरी तरह से रुक जाना. So all these meanings are applicable here because nirodhavastha is total stoppage. So restraint is involved in initial stages. मतलब आप रोकने का काम initial stages when you start meditating. In the initial stages you do. Control in more advanced stages. So in more advanced stages of the practice, it is basically the control over the process and total inhibition or complete suppression in the last stage of the sadhana. तो शुरुआत में हम रोकते हैं, बाद में पूरी तरह से वी हैव ए कंट्रोल एंड लास्टली टोटल सप्रेशन. वी कम टोटली सप्रेस ऑल द वृत्तिस और वी सी दैट ऑल द प्रत्ययास और source of those vrittis are totally stopped or suppressed. So yoga is basically defined now as the restraint of the fluctuations in the consciousness. So yoga is defined as the niruddha avastha of the vrittis in the chitta, in the consciousness. So yoga is the tool which helps you to stop the modifications in the consciousness, or yoga is defined as the restraint of fluctuations in the consciousness. It is the art of studying the behavior of consciousness. It is basically जब आप योग साधना कर रहे होते हैं तो you try to understand what is the behavior of your chitta, which has three functions, basically cognition, conation and motion. So you try to understand what is cognition, conation and motion. So yoga shows ways of understanding the functions of the mind. तो योग एक ऐसी विधा है which helps you to understand the different functions of your chitta and the subtler part of the chitta and the grosser part of the mind, and helps to quieten their movements, leading one towards the undisturbed state of silence which dwells in every seat of consciousness. So चित्त में, चेतना में जो अलग अलग वृत्तियां उत्पन्न हैं, इंद्रियों का उन पर प्रभाव क्या पड़ रहा है, मन का उन पर प्रभाव क्या पड़ रहा है, वॉट एवर influences are there, and how you can control them and how you can bring to the nirodhavastha or total suppression or complete stoppage of that stage is studied in the yogic philosophy. तो when we talk about चित्ता, हमने चित्त के बारे में बहुत कुछ समझा.
बहुत कुछ समझा एंड वी नो वेरी वेल योग क्या है, चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है. सो नाउ वी विल सी व्हाट आर दिस चित्त भूमिस. चित्त किन किन भूमियों में स्थित है. तो सबसे पहली भूमि है मूढ़ अवस्था. तो मूढ़ अवस्था बिल्कुल इट इज़ ए स्टेट ऑफ ए डोंकीज माइंड, टोटल डल without any activity. Even if you push the person to do any activity, he will be dull, he will be sleeping just like a donkey. Now next is Shiptavastha, where your mind is active like a monkey. आपको पता है, we all know that how monkeys are there. They are very restless, they are very anxious, they will not be focused on anything. They will be keep on jumping on, hopping on multiple things. That is the Shipt Avastha of your mass. Now Vikshipta Avastha of the mind is basically occasionally you are steady, you stay for one point for few minutes for at one point, फिर किसी और चीज़ पे, just like butterfly how it moves on different flowers and stays for some time. Then Ekagra Avastha is one pointed awareness. It is a focused awareness where you are totally focused on the object of meditation. You are able to focus. And only the object of meditation, object of focus is present in the in your mind basically. And then Niruddhavastha is the final stage, which is fully concentrated mind. So the question comes, what is the ideal, what is the ideal chitta bhumi for a yoga student? You may say that Vikshiptavastha is at least basic requirement. Vikshiptavastha is definitely a basic requirement because at least you are able to focus for some time. But what yoga says, what yoga requires, what yoga expects from you is, it requires Niruddhavastha. Even though you practice from the Vikshiptavastha, come to Ekagravastha and you come to Niruddhavastha, but the minimum requirement to enter Dharana Dhyan and Samadhi is your Niruddhavastha. Because Shipt and Vikshipt Avastha you can easily overcome with the practice of Pratyahar, Asanas, Pranayamas, Yamas and Niyamas. Without having the Ekagravastha or without having the Niruddhavastha of your Manas, your Chitta will not be able to focus. Because all the past sanskaras, all the past memories, everything will keep on disturbing it. So always remember, to be a yogi, you have to aim for Niruddhavastha. Don't aim for Ekagravastha or Vikshiptavastha, even though it is the starting point, but our aim has to be towards the Nirodhavastha only. Because unless and until you do Nirodhavastha or you focus Nirodhavastha, you will not be able to move forwards. So now let us go for the next sutra.